Hello everyone, I welcome you all on this YouTube channel UPSClogy. In this video, we are going to talk about that how you can link the rights, the specific topic called rights or fundamental rights, or let's say freedom of speech and expression or anything. How can you link rights with the thinkers and theories of public administration, and how can you use these things, and while writing the answer, any specific answer on public administration paper 2 with respect to rights, how can you bring the dimensions of public administration paper 1 in that specific answer. I am going to help you in that particular aspect, and we are going to cover all these things in 5-10 minutes in this video only. तो इसी वीडियो में 5-10 मिनट में आपको हम अगले थोड़े 5-10 मिनट के अंदर बताएंगे कि कैसे आप राइट्स को लिंक कर सकते हो थियरीज और थिंकर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 के साथ. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन यू यूज दिस थिंग? सो बेसिकली राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट कॉर्पोरेशन मीन्स NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल NHRC, it is given in the public administration paper 2 significant issues in administration. Apart from that, rights are also the part of your constitution, and that's why under the philosophical framework of the government and the constitution, and in paper 2 you will get this topic called right. So ultimately rights are important. UPSC might ask this question because of the syllabus given in the paper 2. तो UPSC पेपर 2 के हिसाब से राइट्स कहीं पे भी पूछ सकती है, क्योंकि सभी सिग्निफिकेंट इश्यूज में अभी राइट्स दिए हुए हैं, NHRC की बात की हुई है. इसके अलावा फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो भी सिलेबस का पार्ट है उसमें भी जो वैल्यू प्रीमाइसेस है उसमें राइट्स जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. तो जब आप राइट्स की बात कर रहे होगे तो आप कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 का डायमेंशन उसमें इनकॉर्पोरेट करोगे, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड हेयर यू कैन सी द पबेटपीडिया मैगजीन ऑफ अप्रैल 2021 आई हैव लॉन्च टुडे ओनली. एंड इफ यू रीड दिस स्पेसिफिक आर्टिकल वाज गिवन अंडर दिस टॉपिक कॉल्ड वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के उसके टाइम पर मैंने इसको लिंक किया. अपार्ट फ्रॉम दैट हियर यू कैन सी रेफर टू अफॉरमेंशन डायग्राम अगेन इन द नेक्स्ट टॉपिक, बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक जो था वो फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट था, उसके अंदर ह्यूमन राइट्स की बात थी. सो 2 टॉपिक्स वर देयर इन विच यू कैन लिंक. एंड दिस मैगजीन इज समथिंग, दिस इज द वर्स्ट मैगजीन इन द मार्केट. दिस इज द ओनली मैगजीन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द मार्केट, एंड दिस इज द वर्स्ट मैगजीन इन द मार्केट. डोंट गो फॉर दिस मैगजीन. ठीक है, इस मैगजीन के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आपने इसके बारे में सोच लिया ना, अगर ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में सोच लिया ना, तो बहुत गलत होगा. बहुत गलत इसलिए होगा क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है. 1500 रुपये का जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है वो नहीं लेना चाहिए. 1500 रुपये, 2000 रुपये का एक टेस्ट लिखकर उसमें 8 में से जो 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं उसमें 3 क्वेश्चन कर लेने चाहिए, और फिर बाकी का आंसर बिना चेक कराए ऐसे ही दे देना चाहिए UPSC के जो भी इंस्टीट्यूट हैं उनको, ठीक है, चंदे में, दान में. सो दिस विल बी बेटर. ये मैगज़ीन आपके लिए नहीं है अगर आप UPSC प्रिपरेशन कर रहे हैं. ओके, नाउ let's come back to our topic. So the topic is rights. How can you link? So the topic is constitutionalism. First of all, in the constitutionalism paper 2 public administration, constitutionalism is given. In that constitutionalism means limited government, and rights are something that will bring that kind of limitedness in the working of the government. Government जो काम कर रही है ना, तो अगर आपके rights हैं तो गवर्नमेंट के सामने वो rights खड़े हो जाएंगे कि इनको एनक्रोच नहीं करना है. ओके, आई होप यू आर गेटिंग. सो दैट्स वाई राइट्स आर इम्पॉर्टेंट. एंड freedom of speech and expression, I told this thing because we are covering this thing in the context of freedom of speech. But yes, you can say that limited government का जो concept है, जो UPSC ने पूछा था इसी साल, UPSC has asked this question in this previous year in 2020 itself, in the prelims itself. Okay, that what do you mean by the constitutional government? So constitutional government is limited government. Okay, so that thing is something that is important for you to understand. Apart from that, we have the topic called new public administration. And this new public administration has RVAC. RVAC is nothing but relevance, values, equity and change. Okay, so that equity
social equity, or for that matter that values. Okay, so these things are nothing but they are basically you can say the value perspective or the kind of things, and here rights are something that you can link while writing any point in the answers. I hope you are getting this thing. तो उसमें जो equity values है वहाँ पर भी rights को link कर सकते हो. न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एनपीए जो 1960s का है, तो वहाँ पे भी आप ऐसे लिंक कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, if you read the Prasad and Prasad properly, you will get one thinker called Karl Marx. And Karl Marx, he was basically talking about some things, but at the same time you will also get this idea of Hegel's philosophy of rights. Hegel, basically he is a person. Philosophy of rights is something that is considered as one of the important work of Hegel only, and in that specific work he highlighted this thing that he provided, or he was basically emphasizing on the checks and balances to prevent the encroachment of the rights by bureaucracy, because ultimately bureaucratic control is something that should not encroach the rights. So that's why there should be some change, some sort of you can say some sort of checks and balances. And for example, we have SEBI, we have RBI. In present context we have regulatory bodies. Why these regulatory bodies are there? To ensure that, to assure this thing that the rights should not be encroached, means the people's rights should not be encroached. तो ultimate goal इनका यही है, इन सारी organization. The ultimate goal of these organization, these regulatory body, is this only, that the rights of the people of this country should not be encroached. RBI जो है तुरंत बैन लगाएगी, तुरंत जैसे ही पता चलेगा, when RBI will come to know about any irregularities in the banking sector, they will ban that bank. They will take the strict action under the Banking Regulation Act 1949. So that is nothing but the checks and balances that are being provided to ensure the kind of to ensure this fact that rights of the people should not be encroached, because rights are supreme, and this is the Hegel's philosophy of right. Okay, I hope you are getting. And here bureaucracy is something that is important, कि bureaucracy जो है वो बहुत ज़्यादा उसको खुली छूट नहीं देनी है, because we know about the bureaucracy, we know about the concept that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. We know about the concept that bureaucracy helps self-aggrandizement, which we have studied in the topic called public choice approach, and we have also studied different criticism of bureaucracy by Weber as well. So this is the one point that you can highlight over here. And हिंदी में भी बता देता हूँ कि हीगल जो हैं उनका एक पब्लिश किया उन्होंने, जिसका नाम है द फिलॉसफी ऑफ राइट्स. तो हीगल का ये वर्क है. इस वर्क में उन्होंने ये बोला है कि जो चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, ताकि ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा खुली ना हो जाए, इतनी ज़्यादा ऐसी ना हो जाए कि अनरेस्ट्रिक्टेड हो गई है और वो दूसरे लोगों के राइट्स से इंक्रोच कर रही है. ऐसी नहीं होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी. इसलिए चेक्स एंड बैलेंसेस की ज़रूरत है. और वो चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे आते हैं? राइट्स जब दिए जाते हैं लोगों को, है ना. तो इस तरीके से राइट्स की बात हो रही है. तो जैसे एग्जांपल देख लो, रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं सेबी, आरबीआई. तो ये सब क्यों बनाए गए? ये चेक्स एंड बैलेंसेस इसलिए बनाए गए हैं कि भाई किसी के साथ मतलब किसी अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो दीज बॉडीज़ विल कम इनटू पिक्चर. सिमिलरली राइट्स आर समथिंग दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका राइट वॉलेट हो रहा है, यू कैन गो टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो यूजिंग आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था, आर्टिकल 32, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है कि अगर आपके राइट्स इंक्रोच हो रहे हैं तो आप ये यूज़ कीजिए, रेमेडी यूज़ कीजिए. एंड दैट्स वाई ऑल दीज थिंग्स यू कैन लिंक लाइक हीगल की फिलॉसफी ऑफ राइट्स से, कि ब्यूरोक्रेसी अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए. और ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें तो हमने बहुत सारे क्रिटिसिज्म पहले से देखे हुए हैं ब्यूरोक्रेसी के. इवन बेबर के साथ जब हमने पढ़ा था चैप्टर बेबर का, तो हमने बहुत सारे, लगभग मैंने 20 से 25 क्रिटिसिज्म या 20 क्रिटिसिज्म के कीवर्ड्स बताए हुए हैं. ठीक है, you can simply search Weber by Rahul Shakya, you will get my video
ऑन द डिफरेंट यूट्यूब चैनल. अपार्ट फ्रॉम दैट द सेकेंड थिंग जो हिंदी में बताना चाहूँगा, सेकेंड थिंग ब्यूरोक्रेसी के बारे में हमने पब्लिक चॉइस अप्रोच में भी ये देखा था कि ब्यूरोक्रेसी सेल्फ एग्रेंडाइज्ड ब्यूरोक्रेसी है, तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि ब्यूरोक्रेसी खतरनाक हो सकती है. इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी की हमने और भी क्रिटिसिज्म अलग अलग जगह अलग अलग टॉपिक में पढ़े हुए हैं. सो दैट्स वाई वो एंगल में भी आप यूज़ कर सकते हो ईगल को, और राइट्स के बात में भी यूज़ कर सकते हो कि राइट्स इसलिए ज़रूरी हैं भाई. इसके अलावा वी हैव द अनदर थिंकर अनदर थियरी कॉल्ड पब्लिक पॉलिसी. इन पब्लिक पॉलिसी वी हैव दिस राइट बेस्ड अप्रोच. अगर पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन पढ़ोगे तो यू विल फाइंड दिस थिंग कि बहुत सारे मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी हैं, बहुत सारे मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में बहुत सारे मतलब आइडियाज़ हैं, लाइक इंस्टीट्यूशनल मॉडल है, लाइक अदर थिंग्स आर देयर. ओके, एक उसमें है राइट बेस्ड मॉडल. राइट बेस्ड मॉडल जो है वो राइट बेस्ड मॉडल है, ये जैसे सोशल जस्टिस एग्जाम्पल हो गया उसका. तो जो आपके जो राइट बेस्ड थिंकर थे, ठीक है, एक तो जस्टिस थियरी होती है कि जस्टिस की बात होती है, एक राइट्स की बात होती है. तो राइट बेस्ड अप्रोच जैसे सोशल जस्टिस, तो एग्जाम्पल है जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. अब यहाँ क्या है, पहले भी फूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती थी. अर्लियर ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग द फूड सिक्योरिटी टू द पीपल ऑफ इंडिया बिकॉज आर DPSP have this provision that the standard of living, the food security, these things should be ensured by the government of the day, or for that matter the state per se. But after this provision of national food security, that welfare you can say that beneficiary approach was converted to right based approach. पहले क्या था, एक beneficiary की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब उनका अधिकार है लोगों का. Okay, now the people have this right, and that's why this becomes important for you, that rights are something that are very important, and even public policies are based on that rights based approach. I hope you are getting this thing. And apart from that, behavioralism is one component. In behavioralism, if you read behavioralism or human relation approach, they are different from the classical approach because of this thing only, that they believe the human relation approach or the behavior approach, these approaches believe in the the importance of human beings per se. They believe that humans are important. They believe they treat humans as human rather than humans as machines. The treatment of humans as machine was the idea of classical arena. I hope you are getting this thing, and that's why behavioralism is something that talks about human. If one is talking about human, it must be talking about the rights of the human, and that's why this is something जो आपको पता होना चाहिए. However, there is one more point. Behavioralism is there, but at the same time, if let's say you have to link this rights with respect to or freedom of speech and expression with your classical theories, then you can use this quote, this specific keyword, that in classical we have Henry Fayol, and Henry Fayol was talking about the 14 principles of administration, and one of them is initiative, and initiative is nothing but the human relation principle. ये initiative, it is the human relation approach or human relation principle, it is the behavioral perspective. वैसे तो 14 में से सारे classical हैं, all of them, most of them are classical, but some human relation approach things are there, some behavioral perspectives are there, and initiative is one of them. Initiative means you have the power of to initiate something. It is possible only when you have this freedom of speech and expression, then only you can initiate something. Okay, I hope you are getting. So initiative is one of the principle of the management as per Henry Fayol. So you can consider that thing as the freedom of speech and expression itself, and the behavioral perspective itself. Okay, I hope you are getting, and in this way यू कैन लिंक द राइट्स. हिंदी में बताना रह गया है. हिंदी में यही है कि देखो, बिहेवियरल थिंकर्स जो हैं वो ह्यूमन सेंट्रलिटी की बात करते हैं, वो ह्यूमंस की बात करते हैं, वो ह्यूमन को ह्यूमन की तरह देखते हैं, इंसान को इंसान की तरह देखते हैं, इंसान को मशीन की तरह नहीं देखते हैं. और क्योंकि ह्यूमंस को ह्यूमंस की तरह देखा जाएगा तो उनके राइट्स जो होंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. उनकी सोशल कंडीशन, उनका साइकोलॉजी, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी ही, लेकिन साथ में राइट्स भी इंपॉर्टेंट होंगे. ह्यूमन के ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा,
बिहेवियरलिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा, बिहेवियरल चेंजेस का कॉन्सेप्ट आएगा, सिर्फ डरा के धमका के ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, तो यानी राइट्स आएंगे और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाली चीज़ें भी आएंगी। तो आप ऐसे क्लासिक बिहेवियरल से लिंक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर क्लासिकल से भी करना है तो यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल लाइक फेयोल, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द 14 प्रिंसिपल, लेकिन उनमें एक प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है कि जो वर्कर्स हैं उनके पास पावर होनी चाहिए टू इनिशिएट समथिंग, मीन्स कुछ स्टार्ट करें। स्टार्ट तभी करेंगे जब हम उन्हें एज अ ह्यूमन ट्रीट करेंगे, समझ रहे हो, अदरवाइज हम क्यों उन्हें इनिशिएट करने को कहेंगे, समझ रहे हो। सो दैट थिंग इज समथिंग जो आपका बिहेवियरल डायमेंशन है क्लासिकल के अंदर। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि बिहेवियरलिज्म ये तो बदनाम है कि बिहेवियरलिज्म बाद में शुरू हुआ, इवन क्लासिकल थिंकर्स में भी बिहेवियरलिज्म का कंटेंट देखने को मिलता है। तो आप वहाँ पे यही चीज़ें यूज़ करते हो कि इवन फेयोल जो है वो इनिशिएटिव की बात कर रहे थे, इवन टेलर जो है वो मेंटल रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे भी एक बिहेवियरल चेंजेस लाने की उन्होंने भी कोशिश करी। उसके बाद और भी थिंकर्स इस तरीके से कुछ ना कुछ, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि प्योर क्लासिकल थे 90% थे, लेकिन कुछ उनके यहाँ थोड़ा थोड़ा सा कंपोनेंट था जो ट्रेस करके आपको आपके आंसर्स में लिखना था उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ओके, this is it for the day. I hope you are getting that how can you link this rights, and whenever you are dealing with any question with respect to rights, or let's say on the National Food Security Act you are talking, then you can use the right based approach, hashtag public policy, or let's say you are talking anything about classical behavioral, then you can use. So there are multiple uses of this video. ये वीडियो कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों की तरह ABCD बता दी और यही है। Try to use it at multiple places, and I hope you are getting. And again I would say, don't download this magazine, don't go for this magazine. This magazine is the worst magazine in the market. There are no other magazines in the market for your public administration, but you should not even try this magazine, because if you try it is not good. Okay, don't join the Telegram group. You can join the Telegram group, but don't download that magazine. Okay, the link for the Telegram group is given in the description box. You can join the Telegram group where more than 2161 members, 2167 members are there. You can basically download that group, and you can enjoy learning. You can post your answers, and you can make the peer review process, etc. But don't download this magazine, because this is the waste of the time. Okay, thank you so much and have a nice day. Bye bye and take care.